देखिए, हमारी इंडियन फिल्म्स में जितनी कहानी जरूरी होती है उतना ही जरूरी होता है उन फिल्म्स का म्यूजिक, उनके गाने। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे जो खास मेहमान हैं वो एक सिंगर हैं, कंपोजर हैं, राइटर हैं और बहुत सारे हिट गानों में उन्होंने अपना म्यूजिक दिया है और उनका लेटेस्ट गाना बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन विक्रम मॉन्ट्रोस, जो इस वक्त हमारे साथ है। विक्रम, बहुत सारी बातें तो आपसे करेंगे, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच निधि। थैंक यू। ओके, एंड नाउ टेल मी कि जो गाना अभी रिलीज हुआ है काफी ट्रेंड कर रहा है विद द ऑडियंस, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। सो वाज दिस एज जी, एक्सपेक्टेड? आई डोंट कीप एनीथिंग। मैं कभी कुछ बनाने के पहले ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। बिकॉज तो आई जस्ट मेक म्यूजिक फॉर द लव ऑफ इट। वो अच्छा लगता है, किसी फिल्म में जाता है, एंड देन द ऑडियंस लव्स इट। दैट्स लाइक ऑब्वियसली इट मेक्स मी वेरी हैप्पी। बट आई डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस एज सच। आई जस्ट डू माय वर्क बिकॉज थोड़ा सा अनफेयर भी हो जाता है ऐसा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, क्योंकि कैसे जब हम स्पेशली जब हम थोड़ा डिफरेंट साउंड स्केप में जाते हैं या डिफरेंट जॉनरास में जाते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। पसंद भी आ सकता है, नापसंद भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट। तो बट यू हैव yeah, एक्सपेरिमेंटेड विद अ लॉट ऑफ जॉनर्स, राइट? आप एक ही I तरह have। के म्यूजिक पे स्टिक आपने नहीं किया है। सो नहीं नहीं, इज इट इंटेंशनल? शायद कह सकते हैं इट इज प्रिटी इंटेंशनल, बिकॉज मैं खुद इतने तरीके का म्यूजिक सुनता हूँ और मुझे आई लव ऑल द जॉनरास। मतलब देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक जॉनरा जो मुझे पसंद है या ना पसंद है। मैं शास्त्रीय संगीत भी बड़े मन से सुनता हूँ, मैं गजल भी बहुत मन से सुनता हूँ, बट मैं लेड जेपलिन, पिंक फ्लॉयड भी बहुत मजे से सुनता हूँ, ईडीएम भी सुनता हूँ। तो आई लिसन टू एवरीथिंग। हाँ। अब जैसा मूड होता है वैसा गाना सुनता हूँ। तो सेम मेरा, जब व्हेन आई मेक म्यूजिक फॉर माई सेल्फ, इट्स द सेम लाइक दैट, कि जिस मूड में रहता हूँ वैसा म्यूजिक बनाता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। एंड अगर मतलब जी। गानों जो आपके आए हैं उनकी हम अगर कॉन्ट्रास्ट देखें, फ्रॉम कर हर मैदान फतेह टू मार खाएगा, जी। मतलब जो या। साउंड यूज हुआ है, जो म्यूजिक यूज हुआ है, जो उसका टोटल टोनालिटी है, वो काफी डिफरेंट है। जी। सो व्हाट इज योर प्रोसेस जब भी आप गाना कुछ बना रहे होते हैं, कंपोज कर रहे होते हैं, तो व्हाट इज द प्रोसेस? या। देखिए, जब मैं पर्सनली जब किसी फिल्म के लिए म्यूजिक बनाता हूँ, so for me the most important thing is the film and the character for which I'm making the song for, because nothing is bigger than the film. अगर मैं कुछ ऐसा म्यूजिक बना रहा हूँ जो कि जो कि फिल्म को हेल्प नहीं कर रहा है हम्म। टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड और टू स्टैब्लिश द कैरेक्टर, देन आई फील कि वो बड़ा इनकम्प्लीट सा मामला होता है। क्योंकि मुझे अगर सिर्फ एक अपने तरीके का म्यूजिक बनाना होगा तो मैं सिंगल्स करूंगा, राइट? बट व्हेन आई एम मेकिंग द फिल्म, सो द फर्स्ट थिंग आई कीप इन माइंड इज द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी एंड हाउ द स्टोरी इज कमिंग, या मैं किस चीज के लिए गाना बना रहा हूँ। जैसे इन दिस केस मार खाएगा, इट्स it's the introduction, like just to show who Bachchan Pandey is. करेक्ट। So it is for Bachchan Pandey, the kind of menacing character he is, and he's lethal, deadly. तो हमने साउंड भी वैसा रखा कि बहुत ग्रंजी साउंड है। जिस तरीके से फरहाद ने गाया है, बहुत ज्यादा ग्रंज है। लिरिक्स बहुत ज्यादा ही वो आम बोलचाल वाली भाषा है। हाँ। जैसे उसमें है कि फिर ना मैं समझाएगा, मार खाएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल, जो बदमाशी कॉमन वाली लिंगो, लैंग्वेज हाँ। होती है। एग्जैक्टली वो है। सेम व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीवियस वन, जैसे हम लोग ने तेरा बाप आया किया था। So again, the thought was like that. It was a genre which I wanted to experiment with, and the situation came in, and I'm very thankful to Vipul Shah कि उन्होंने वो accept किया कि नहीं यार, ये हम लोग use करते हैं. So again, it's something to do with the character. And Kar Har Maidan Fateh was a completely different this. हम्म। It was Sanjay Dutt's biopic, and I'm personally very close to Sanjay Dutt. In fact, there's a he's he's one of the reasons why I became a part of Sanju, because he introduced me to Rajkumar Rani sir ओके। and recommended me there. So, and I have known him for a long time, so I knew what kind of a song would motivate
Sanju sir. There is a certain soundscape he likes. So there is rock in it. There is a little Indian touch in it. So yeah, so that's a overall process when it comes to the film music. Okay. And typically, I mean, how long does it take for you to compose a song? Just say, let's say you're doing it for a movie. अगर हम इसको ही अंडर कंसिडरेशन ले मार खाएगा तो आपको ब्रीफ मिला एंड आपको एक कैरेक्टर स्केच मिला यू न्यू हाउ यू हैव टू क्रिएट इट सो कितने दिन लग गए to make the song? See, basically, I have a very weird way of working. Okay. I'll tell you how, because, I love the filmmaking thing. तो मुझे सिनेमा बहुत पसंद है, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, तो हमेशा कुछ ना कुछ सिचुएशन मेरे अपने दिमाग में रहती है एंड आई लाइक राइटिंग माई ओन हुक लाइन्स. तो मेरी जितनी भी हुक लाइन्स हैं, चाहे वो कर हर मैदान फतेह हो या पाबा बोल सॉरी या तेरा बाप आया या इवन मार खाएगा और जय हिंद की सेना या इस टाइप की जो भी हुक लाइन्स है वो मैं हमेशा अपने लिए रेडी रखता हूँ, एंड देन sometimes so the concept is always ready with me. Okay. क्योंकि मैं वो grooves बनाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं करता ही रहता हूँ. It's like कि अगर if you keep the weapon unused for a long time, वो थोड़ी जंग लग जाती है. तो मैं I like regularly working. तो उस सिलसिले में कुछ अगर ऐसा आता है और अगर वो मुझे लगता है कि नहीं सिचुएशन में जाता है तो मैं फिर उसको सुनाता हूँ. जैसे कि इन दिस केस व्हेन Mr. Azim Dayani, who's a supervisor, music supervisor, he called me that, he needed a song for Bachchan Pandey and he told me the character and I instantly pitched him this idea. मैंने कहा, what, I have something. It's called मार खाएगा. So he was very pumped कि यार ये पर use कैसे किया है. मैंने कहा आप सुनो. So he heard it and he was like, यार ये तो superb है. So then we started making the song. So then he became a part of the song. He wrote very interesting lines in it, like that dialogue, "मुझे भाई नहीं Godfather बोलते." That's by Azim himself. And अंतरा लिखा उन्होंने. फिर फरहाद ने जो portions लिखे थे, मैंने portions. फिर वो it took us, I think, एक हफ्ता I think पूरा गाना एक complete करने में. Okay. So आराम से. ओके तो ये बाय यू कंपोजिंग तो जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स जो मेन स्टोरी है आप देखते हैं उसे किस कैरेक्टर के लिए आप लिख रहे हैं वो गाना वो आप देखते हैं देन दैट इज हाउ यू कंपोज. अब ये जो गाना है ये फिल्म में अक्षय का जो कैरेक्टर है जैसे आपने भी कहा उसका इंट्रोडक्शन एक तरह से है द काइंड ऑफ कैरेक्टर बट डू यू ऑल्सो कीप हु द एक्टर इज डू यू कीप दैट ऑल्सो इन माइंड कि वो कैरेक्टर को कौन सा एक्टर पोर्ट्रे कर रहा है. 100%. Because, I come from that school where we have seen, larger than life movies. I like heroism in songs. मुझे अच्छा लगता है कि, when, we've grown up watching Sanjay Dutt and, Salman Khan, Akshay Kumar, and even in the older times, how, Mr. Bachchan used to enter in Zanjeer, how his, complete character. So I love that, space. And I've been a Sylvester Stallone fan and Arnold. Then Rajni sir, obviously. Anytime I make a song, somewhere in the back of my head, there is Rajni sir. I mean, without him, all my songs are incomplete. It's just there. So we have grown up. So I think it automatically comes. And obviously, when you have a superstar like Akshay Kumar that you're making a song, ऑटोमेटिकली दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स बिग कि यार कुछ भी हो. देखिए गाना अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा वो तो नहीं पता बट एक चीज मेरे अपने हाथ में रहती है कि मैं उसको बड़ा साउंड करा सकता हूँ कि नहीं गाना दैट आदमी जब इंसान सुने तो बोले कि यार गाना तो बहुत बड़ा साउंड कर रहा है इट्स साउंडिंग ह्यूज व्हेन इट कम्स टू द साउंड स्पेस. तो या डेफिनेटली इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. दैट्स देयर. So how was it creating this song for Akshay and then unse koi feedback aapko mila? Did he like before it got released he heard it and any feedback? You see, they all loved the song, that's for sure, and that's why it became a part of the film. And the best thing working with Akshay sir is that when you have a superstar who gives you complete freedom, as an artist, I think that's the most satisfying feeling. Like from start to end, the song
that has gone is just, what an artist wanted, you know, which was the case in Kar Har Maidan Fateh also. Like even Raju sir, the kind of creative freedom he gives and the faith, in an artist. That's, I think, the most important thing. And for like in Sanju, that was my first movie. Hmm. I mean, can you imagine the first movie, my first song, and Rajkumar Rani and the kind of trust he's putting in on a new guy uh, who has basically nothing to actually present ki ye mera हाँ. hai. The same is with Akshay sir, like, the kind of faith that he has put in with this style of this genre. Because if you listen to the music that has been released in a long time, this sound has not been touched. I think the same genre was attempted. The last time it was attempted was Tera Bapaya, which was again my song हाँ. only, and now this song. So it takes a lot of this to go ahead with it. Ki, nahi yaar, we'll do it. Correct, And correct, obviously his performance in the song has taken the song to a different level altogether. correct. So So, yeah. so Vikram, tell me, जैसे आपने बताया, and we are on this topic of संजू के साथ आपकी शुरुआत हुई making songs for Bollywood, and to this song now. How has this journey been? How do you see it? Has been very interesting. Like I've and anyways, I've been a very satisfied person in my Hmm. life. I've always been happy, and I love making music more than anything. So mostly I'm 99.9% of the times I'm in my studio, which is my home studio, this space, and I'm just making music here. And by God's grace, I've been getting films, you know. I get calls ki हाँ ये गाना चाहिए और मैं दे देता हूँ. I mean, it's as simple as that. So I'm just taking one day at a time, and it's very satisfying because, like, before Bachchan Pandey, I did Jai Hind Ki Sena in Hmm. Shersha, Hmm. and it's just satisfying that you're getting, you're making music, and people are asking you to make music that's going to be there forever. Correct. Songs like these, when you become a part of a film like Shersha and you make a Jai Hind Ki Sena, which is dedicated to the Indian Armed Forces, it's just gonna be there. And so I think I'm very lucky and blessed that way. So Correct. yeah, I mean, it's been an amazing journey. But ये journey तक पहुंचने के लिए, for Vikram to Hmm. start his journey with Kar Har Maidan Fateh, I think it took you a lot of Yeah. time. It took you many years. Yes, it did. It did. I came to Mumbai in 2005, and actually, I actively started music in 2012. Okay. So I think from 2005 to 2012, I was just trying to figure out the place and trying to make sure that I survive. Hmm. So I worked in call centers. I did a lot of odd jobs. In that process, I used to try and meet people with the guitar. I used to compose and present. But then, obviously, वो मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं म्यूजिक प्रोडक्शन सीख जाऊं तो मेरे लिए बड़ा बेनिफिट होगा. बिकॉज ऑब्वियसली at that time the music producers I was approaching were always all working and busy. Hmm. और मेरे पास उतने पैसे थे नहीं कि मैं अपने स्क्रैचेस और डेमोज बनवा पाऊँ. तो मैंने कहा यार एक नौकरी पकड़ते हैं और साथ ही साथ सीखते हैं, देखते हैं कितना समय जाएगा. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल. तो वो करते करते आई लर्न म्यूजिक प्रोडक्शन. अपने गाने में खुद ही प्रोड्यूस करने लगा. एंड दैट वाज लाइक, आई थिंक, द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ एंड द बेस्ट डिसीजन आई टुक इन माय लाइफ, दैट टू लर्न म्यूजिक प्रोडक्शन. So 2012 में then वो start हुआ, and then I got an opportunity to meet Sanjay Dutt, Hmm. and he became like he really motivated me, and he loved my music, and he said the, I'll give you a film, and he gave me a film which was called Hasmukh Pighal Gaya. अच्छा. And I was a part of that film. That was a solo album that was given to me. But then things happened, and unfortunately he had to go to jail, and the film stopped. And then I thought ki maybe God wants something else for me, and maybe he wants me to be better. And I kept on working.
And then finally I got Kar Har Maidan Fateh. So then I understood why a lot of things didn't happen, because this was supposed to be my first film song. Correct, correct. And the journey has been Yeah, beautiful, touch wood. But the world super knows you, good. Vikram, as Vikram, the composer, Vikram, the writer, Vikram, the Yeah, singer. But yeah. आप कौन से वाले विक्रम से ज्यादा relate करते मैं uh, मैं actually Vikram the composer. हैं? Okay. Yeah. I'm like a out and out composer. I love, sitting in some weird places, just making my own music, composing something, writing. So it all happens very simultaneously. And as I said, I produce my own music. So it uh, मेरा एक्चुअली पूरा टाइम ही समय इस पे जाता है. मतलब मुझे कोई पूछता है कि और क्या, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मुझे आता ही नहीं एक्चुअली कुछ करना इसके अलावा. तो फैमिली है, फ्रेंड्स है, म्यूजिक, एंड दैट्स एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. Correct. That's the way I But want but it. you also sing. We know this, okay? So Yeah, before yeah. ending the interview, I will not let this opportunity go where you will not sing a couple of tunes for us. So if you could be kind enough, Yes, sure. I'll try to sing Kar Har Maidan Fateh. please. पागल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला. रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह. Wow. It's a Thank little you. difficult to match Sukhi ji's, scale. I I know. try. No, thank you so much, and I really hope कि आप भी Most म्यूजिक का जो welcome. मैदान है वो फतेह करें, and may you keep bringing great music to us. And all the Thank you so much, best to Sanjay. you, Vikram, and thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Very nice Thank talking to you. you. Same here. Bye bye.